ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽग्रयुगं स्मरामि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के लीला अवतारों की कथा ब्रह्मा जी कह रहे हैं और नारद इत्यादि ऋषि उनका श्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलो धरणाय बिभ्रत् क्रोडिं धनं सकलयज्ञमयीमनन्त अन्तर्महार्णवोपागतमादित्यं तं दृष्टया द्रिमिवा ब्रजधरो ददार जातो रुजैरजनय सुयमान् सुयज्ञ आकुति सूनुररमणा रमरानद दक्षिणायां लोकत्रयस्य महितमहरयदार्दिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तां जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां श्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं समात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदि अत्रैरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टु दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमा पुरमहिं यदुहयाद्या तप्तं तपो विविधलोक ससृक्षया मे यादो सनादत स्वतपसा सचतुः सनोभूत् प्राकल्पशम्पलविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यद्चक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनेष्टमूर्त्यां नारायणो नरयिते स्वतपप्रभव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं दिव्यस्त्वनङ्गप्रदना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कितनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदमे मुदते न दयन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभीति कामागतं न पुनरस्य मनश्रयेत विद्धा सपत्न्युदितिभर्तृभिरन्ति राज्यो बालोऽपि सन्नुपगता तपसेवनानि तस्मा अदाद ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तु वन्दि मनयो यदपर्यधस्ता यद्वेनमुत्पदगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरजभगं निरये पतन्तं त्रार्त्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभिः दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेदसा वृषभ आस सुदेवी सूनु यो वै चचार समदृङ्गजडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषया पदमामनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरणा परिमुक्तसङ्गा सत्रे ममासे भगवान् हयशीरसाधु साक्षात् सजज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूव रुषते सशक्तश्च मत्स्यो युगान्धसमये छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवरुषतिः शशतोस्तनस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धा क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुर्भये सलिले मुखां मे आदाय तत्र विजिहारः वेदमार्गान् क्षीरो दधा
वमरदानवयूथपानः मुन्मत्नदाममृतलब्धयादिदेवा पृष्ठेन कच्छव वपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रे परिवर्तकषाणकण्डुः त्रैविष्टपूर्वभया सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमन् भृगुटिदृष्टिकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारः दूरो निपात्य विदधारनखे स्फुरन्तं मन्तासरस्य रुबलेन पदे ग्राहेण युधपतिरम्बुजहस्तार्थः आहेद मादिपुरुषाखिललोकनाथा तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधे श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयः चक्रायुधः पदगराजभुजाधिरूढा चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मादस्ते प्रकृत्य भगवान् कृपयोजहार जायान् गुणैर्वरजोऽप्यदिते सुदानं लोकान् विचक्रमयिमान् यदथा धीययः स्मामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथिचरन् प्रभुभिर्न चाल्य नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशोचायमापाशिका धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रदे श्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यः दात्मानमङ्गसिरिजा हरये भीमेने तुभ्यं जनारदव्रतं भगवान् विविर्धा अभावेन साधु परिदुष्टववाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जनशैवा चक्रं च दीक्षवेदं दशसु स्वतेजो मनमन्तरेषु मनवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुतमं व्यददात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठवसतिं प्रतयश्चरित्रें धनवन्तरेस्य भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना निर्णां पुरुजां रुजुआसु हन्ति यज्ञे जभागम मृतायुर्वावरुन्धः आयुश्च वेदमनुशास्त्यवती यलोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्माध्रुगुञ्झितपदं नरकार्तिलिप्सु वनिकण्टकमुग्रवीर्या स्त्रीसप्तकीर्तौरुधारपरस्वधीना अस्मत्प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्चत् यस्मा दधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य ऋगुरं हरवद्दिदक्षोः दूरे सुरेन्मथितसुरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तिर्विडम्बितगजुषूढहासं सद्यो शुभिः स विनेष्यति दारहर्तु विस्फुर्जितैर्धनुषोच्चरतोऽधिसैन्यैः भूमे सुरे तरवरोध विमर्दिताया क्लेशव्ययाय गलयाशितकृष्णकीशा जाता करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममयमुपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलौकिकाया श्रेयमासिकस्य च पदा सकटोपवृताय यदरङ्घतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वेतरथार्थर्जुनयोर्न भव्यं यद वे व्रजे व्रजपशून् विषयो यपीथान् पालस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिपृष्टया तच्छुद्धयेति विषवीर्यलिबिलोलजिह्वा मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदयन्यां
तत्कर्मदिव्यमिव यन्निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निशति ब्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो नदिगम्य वीर्य गृणीत यदुपबन्धममुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तदमुष्य माते यजृम्भतो स्यवदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य संकितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति हयाद्वरुणस्य पाशा गोपान् विलेश पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्वाम् गोपैर्मखे प्रतीयते ब्रजविप्लवाय देवैर्विवर्जिते विसून् पशून् कृपया रिरक्षो धर्तोर्षिरे इन्द्रमेव सप्तदिनानि सप्तामर्षो महेन्द्रमनघैककरैः सलीलं क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां राजोन्मुखकरपदायतमूर्छितेन उद्दीप्त स्मररुजां वधूनां उद्दीप्त स्मररुजां ब्रजवधूनां हर्तुर्हरे शिरो धनदानुगस्य हि च प्रलम्बखरदुर्केशरिष्ट मल्लेभगं शयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्या अन्ये च साल्वकपे वल्लवदन्तवक्त्रा सप्तोक्षसम्भरविदुरधरुक्मिमुख्या एवामृधे समिति सादिन अतिचापा काम्भोजमजय कुरु कैकयसिञ्जयाद्या यास्यन्त्यदर्शनमनं बलपार्थभीमा व्याजाहवेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधिया मम निर्णां स्तोकायुषां स्वनिगमो बददूरपारा आविनीतनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विडपसो विभजिष्यति स्म देवादिशां निगमवर्धवननिर्जितानां पूर्विर्मयेन वेदाभिर्निर्स्यदुर्वी लोकान् घ्नतां मतिविमोहमति प्रलोभम् वेशंविदाय भवभाष्यते औपधर्म्यं यर्झ्यालयेष्वपि सतां न हरे कथास्युपाखण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वदा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोऽहमृषयो नवये प्रदेशां स्थाने च धर्ममघवन्मरावनीशा अन्ते त्वधर्महरमन्यवसुराज्या माया विमुदये मा पुरुषक्तिभाज विष्णुर्नुमीयगणनां कथमोर्हतीय य पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि शस्कम्भयः स्वरन्हसा स्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात् साम्य सदना गुरुकं प्रयाणम् नान्तं विधास्म्यमयि मुनयो गृजासे मायाबलस्य पुरुषस्य कृतो परे गायन् गुणान् दशशतमानन आदिदेवा शेषोऽधुना विषमवश्यति नाशभारम् येषां स एव भगवान् दयेदनन्ता सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्विङ्लीकं ते दुस्तरामतितरन्ति यदेव मायां नैषां ममाहमिति धी
स्वसृगालभक्षे वेदाहमङ्गमरमस्य हि योगमायां यूयं भवस्य भवनः भगवानदत्यवर्य पत्नी मनोसजमनुश्च ददात्मजाश्च प्राचीनवर्यवरेवरिहिरभुरङ्ग उत ध्रुवश्च भुरङ्ग उत ध्रुवः भुरङ्ग उत ध्रुवश्च प्राचीनवर्हिर्भुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैरमुजुकुन्दविदेहगारीरघ्वम्बरीशकरा गयनहुसाध्या मान्धातरलर्ग शतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो परिरमुर्तरयो दिलीपा शोभर्युतङ्क शिवि देवलपिप्पलादा सरस्वतोद्धवपराशरभूरिसेना येने विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्ता पार्थाष्टि पार्थाष्टिशेण विदुरश्रुतदेववर्यः देवे विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रगुणजपरा अविपापजीवा यद्यद्भुतः क्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रियज्जनाभिगिमो श्रुतधारणायै शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मदत्तं शब्दो न यत्र पुरकारगवान् क्रियार्थो मायापरेत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुररजस्वसुखं विशोकं सद्यङ्ग्रनियम्ययतयो यमकर्ति हेतिं जय्यो स्वराडिवनिपानखनेत्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्याभावस्वभावविहितस्य सदप्रसिद्धि देये स्वधातविगमेन वियमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न जिर्जये न विर्यजेते यतेजा सोऽयं ते विहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेना हरे नान्यन् दन्स्मा सदसच्च यत् इदं भागवतं नामायणमे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां तमेतन विपुलीकुरु यतारो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्याखिलाधारे इति जङ्गल्व्यवर्णया मायां वर्णयतो मुस्याईश्वरस्योनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं भायात्मानमुह्यति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनादसंवादे सप्तमोत्सवा सत्यासन्तु मम कामाः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न और उनके उत्तर देना। राजोवाच, राजा ने कहा, राजा बोल रहे हैं, परीक्षित जी बोल रहे हैं किससे? सुखदेव जी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच, ब्रह्मणा चोदिता ब्रह्मण गुणाख्येन गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा न प्राह नारदो देवदर्शनाय हि तद्वेदुत्तमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्याय कथा लोका सुमङ्गला कथयस्व महाभागा यतः मखिलात्मनि कृष्णैर्वेदने सङ्गं मनस्त्यक्षे के कलेवरं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च सुचेषितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि प्रविष्टाय कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समरं कृष्णसलिलस्य यथा शरर् दौतात्मा पुरुषा कृष्ण पादमूलं न मुञ्चते मुक्ता सर्वपरिक्लेशा पान्ता स्वशरणं यदा यदधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोष्यधातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यदा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषा यथा वयवै पृथक्
तावानसा विधि प्रोक्ता संस्थावयवानिवासृजते भूतानि भूतात्मा यतनुग्रहात् तद्रजे येन तद्रूपमनामि पद्मा समुद्भवं स चापि यत्र पुरुषा विश्वस्थित्युद्भवाप्ययं मुक्तात्मा मायां यो मायेशा शेति सर्वगुहाशया पुरुषा वयवैर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोके रमुष्या वयवाः सपाले हृदितैः शुश्रुमा यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्या भवच्छब्द आयुर्मान् च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातो लक्ष्यत्येन मे म्रियत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशी द्विजतमा यस्मिन् कर्म समावायो यथा नेनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सितामभिसरां भूपाताला ककुव्योमा ग्रहनक्षत्र भूवृतां वसरेत् समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चेतदुःखसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्यभ्यन्तरभेदता महतां चानुरचरितं मरणाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यथाश्चर्यतमं हरे नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च तादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्माकृच्छेषु जीवनां तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्य योगेश्वरेश्वरगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणां मतिमितिहासः पुराणयोः सम्प्लवा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसङ्कल्प संक्रमा इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुसायिनां सर्गपाखण्डस्य च सम्भवा आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथा तमतन्त्रो भगवान् विक्रीयत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा न माया मुदास्ते साक्षिवद् विभुः सर्वमेतच्च भगवन् प्रजतो मेऽनुपूर्वशः तत्त्वतो ह्यस्य दुदाहर्तुं प्रपन्नाया महामुने अत्र प्रमाणं मे भवान् परमेशि यदात्मभू परे जेषानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे कृतं न मे सवा परायन्ते ब्रह्मन्नन्दसनादमिः पिबतोच्युत पीयूषा मन्यत्र कुपिता द्विजात् सूतावाच सौपामन्त्रितो राज्यकथायामिति सत्वतः ब्रह्मरातो भृजं प्रीतो विष्णुरातेन संसदे प्राभागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोतं ब्रह्मकल्पा उपागते यद् परीक्षिदृशवा पाण्डुनामनुपृच्छते आनुपूर्वेण तत् सर्वमाख्यातुमुपचक्रमैः। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्राह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान जी ने किसको सुनाया था? स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर कर्मशः देने लगे। ओम जय जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे प्रश्न विधिर्नामाष्टमो पारायणः। सत्या जन्तु मम कामः पुनः जन्तु मनोरथाः।